introduce Honorable Phil Scanlan, the Chairman of New York Global Leaders Dialogue USA. Pam Kwatra is coming. He is City Director, Board Member of New York Global Leaders Dialogue USA. On this note, is coming on Mr. Jagdish Sewhani, President of the American India Public Relations. Phil Scanlan first visited India in January 1970 with the Australian Old Collegium cricket team, playing against many Indian Test cricketers of this era. He captained Sydney University and Adelaide University levels and toured overseas with the Australian Universities levels. He completed his Sydney University economics degree part-time 1965 to 69 with management training in data processing and operations research at CSR, originally the Colonial Sugar Refinery Company. From 1972 to 2024, he was master in charge of economics at St. Peter's College, Adelaide, and specialized in school teaching experience at 3 years. He studied at Oxford and Harvard Universities from 1923 to 1926. Phil Scanlan in 1988 was appointed a member of the Order of Australia with the recognition of his contributions to international relations and promotion of public health and environmental culture. In 2003, he was rewarded the Century Medal. Now he is also heading this New York Global Leaders Dialogue, he will tell you himself. Now he has come to India to see our work. जैसा सुनिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर ना, जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर. So he came to know about our works in the USA and most importantly to see how the untouchables have been brought in the mainstream to society. And when he came to India, he saw the picture of Usha Chaumar, President of Sulabh International Social Service Organization, receiving the award of this Asighat. So he was surprised that I came to see that, look, a woman who herself clearly night side till 2003 could come to receive the award from the Prime Minister of India. This was the wish of Mahatma Gandhi that one woman, as Kahanjar, should be the president of this country. We thought we cannot make anybody president of this country, but I can make the president of Sula. So he was surprised at how in these 12 years a woman clean night soil are called untouchables. Nobody touched her, and how she has become the president and how she took the prize from Prime Minister. I already have given you the copy and this photograph of a Sighat. And the PMO mobile and the Prime Minister, both, they have kept this photograph on their website. So now they have heard Usha Chaumar, how she was clean night style from when she was 7 years old. She was married at the age of 10, went to in-laws at 14, and did the same thing what she was doing in the friend's house and what she was to face difficulties. So Phil and Pam both have come here to see how they have been brought in the mainstream of society. What I did, that I have not. What I did, just I linked the story. In Vedic period, Chandal was supposed to play night sword. I
it continued, and it is continuing still today. Gandhi wanted to restore the human rights dignity. Gandhi in 1934 invited upper caste people in Bindeshwar, Usha, to have food with untouchables. They came, but in the evening they declined. They said, Gandhi, I cannot take food with them. And Gandhi written there that Indians can face the bullets of the British, but they are unable to eat with untouchables. It was as hard as anything when Gandhi was alive. So my contribution is that I joined Bihar Gandhi Centenary Celebration Committee in 1968. And there I was asked to restore the human rights identity of untouchables, to rescue the untouchables from this work of slavery. So because it's a long story, I leave it here. Although I said to my General Secretary, sir, I am a Brahmin by birth, and I touched a lady untouchable. And for that matter, my grandmother forced me to swallow cow dung, to drink cow urine, and Ganges water to purify me. So this is my background. How can I was untouchable? He did not agree. So I went to the leaflet colony of untouchables in Bethia town. From Mahatma Gandhi started freedom movement. You all know that from India. There I had two encounters. One, that a fine morning, a newly married girl, she was being forced to clean night soil to go to Bethia town. She was crying bitterly, not ready to go. I went and intervened. Mother-in-law of the girl asked me, what she will do from tomorrow? Today I leave her. But suppose tomorrow she sells vegetables, who will buy from her hand? And it is tragedy in Indian society. We have Bedras, Prahlad, Sutis. In India we have darker spots. And Sulabh, apart from sanitation, is also a protest movement. But certainly we have to try and solve the problems with non-violence. Then what happened after few days, that a boy with a shirt, he was attacked by the bull, to rush to save him. But somebody shouted from the crowd that he belonged to untouchables colony. And for that matter, everybody left him. We took him to hospital and the boy died. And then I took a vow to fulfill the dreams of Mahatma Gandhi. The question was, Mahatma Gandhi himself had written that till they clean night soil, nobody will have food with them. So this was very important. So my contribution, time is a bit short, I don't want to go in detail, so like I will go later on. So my contribution is that I invented the technology of Sulabh. Had not I developed this technology, even today, India could not have got to end this practice by 2019. So because Sulabh technology, India could be able to end the practice of manual scavenging and also thinking to stop defecation open. So this is my intervention, my invention has made a difference in the lives of untouchables, the first thing. So now we got converted all the local toilets in Sulabh flush toilet, and they got relief from supervision. The second step was we gave them education, so they could read and write. Education is the key of human development. The third step we did that we gave them training, vocational education, but Gandhi used to say basic education. To make papadam, noodles, speakers, carpet making, fashion designing, beauty parlor, all these things we did. And now they earn their livelihood. When I met for the first time in 2003, they were earning only 200 to 10 rupees per month. Now their income is 10,000 to 20,000 rupees per month. So we just see the change of the profession. Now they have become able to earn their livelihood. Then the most important was thing that I thought why they were called untouchables. And I thought they were not allowed to perform the rites and rituals of the upper caste people, go to mandir and so and temples, so on and so forth. And therefore I thought if I help them to go to temple, to perform the rites rituals, upper caste,
they came to Varanasi, take deep in the Ganga, and worship Lord Vishnath, and they had food in this Kashi with 200 Brahmins, his sons and daughters and wife. So that was most important event in Kashi for the first time in their life that they took at the food with Brahmins. So now, what happened? They go to same family now, and they sell papadam, noodle, pickles, and they do facial for them. I asked them that when you return, you just twist the cheek of your client. So when they do like this, they ask, why do you do like this? So madam, this was the house. I used to come, clean night soil, used to call untouchables, and used to give food from above, water from above, and money is thrown out. I had to pick up money. And it's the same house. It has so changed that apart from buying my papadam and noodles, now we are giving you face to do facial for you. And so my founder said that just to remind you, the same house. See, this is change. I have not burnt the books of Vedas. I have not burnt books of Smriti and Puranas. Just one by step, with total non-violence. Che Guevara, he was the champion of taking freedom of Cuba. And when he came to India in 1959, he said, we can resort to violence to feed the hungry people. I repeat, he said, to feed the hungry people, we can resort to violence. But again he said, no. I don't want to endorse my views. I endorse views of Mahatma Gandhi that this problem can be solved by non-violence only. Because the oppressed, if we change the oppressor will change the oppressed. And this will continue. So what I have done, now see before you, that Albert and Tom, 2 towns, you are free to go. You ask me to frustrate, I can frustrate you from going there. You can go, study, sit there, talk to them, talk to people and find out how this has happened. So I say to Government of India that look, in last 12 years, I have done it. You go yourself. Don't believe me. Just go and find out what is happening there. Why not you just adopt the same model with some difference as per requirement, and then you can free India from untouchability. I have asked Brahmins that you should be ready to do sacrifice. And what sacrifice you have to do is, although this is not sacrifice, but I say sacrifice, that you have to go to scheduled caste families, help them to perform right rituals. And the moment you take prasad, the moment you take food in their families, in general, not in a one-two family, then it will go. Automatically go. No course of registration, nothing you do. Only with non-violence, just to go. Because all French journalist lady, she came, asked me, had you been a scheduled caste, could you have brought this impact? I said no. So because you are Brahmin, so you have brought this impact. I mean, yes. So the role of Brahmin, I am not talking about the caste system, but the role of Brahmin is very important to remove the untouchability. Just go and help them to perform the right rituals. Albert, she is there. It took 5 hours to go to temple, sitting in the hot scorching sun, and Pandit was not allowing. And the same Pandit invited her to attend the marriage of his son, also daughter, had food with his family. Now they go, mixed with Albert talk, they go to Brahmins, upper caste people. Now the Brahmins come to the house and say, no, you can take me to Brass also. You go to Delhi, please take me also there. Now those who are not ready to touch them, now they are requesting them, oh, we are going to Delhi, please take me Delhi, I will go with you. I will go to Varanasi, oh, please take me also there. This is such a situation change. Once upon a time they can touch dog, but not a human being. And it changed. So what I say, that Phil came here with Pam Kwatra and did this just to see how it has happened in the country.
to know the situation. So now I just pass on my phone to Phil to say something first. And then if you ask for Usha, Usha will tell later on. But certainly she will speak in Hindi. Somebody will translate for her. Pam Kwatra, she knows Hindi, so she can do the translation. But first I said Phil to tell his vision of his journey. With you. Ladies and gentlemen, thank you very much, and it's a privilege to be here with my colleague from the New York Global Leaders Dialogue, Pam Kwatra. Just let me explain, we're here because our board and our advisory council, each year what we do at our gala dinner in New York, it will be April 12 next year at the Harvard Club in New York, and each year we honour a great humanitarian, and our board has encouraged me with Pam to come to India to see the great works of Dr. Pathak and Sulabh. Before I go on, let me just explain one or two things, if I may. The New York Global Leaders Dialogue was established so that in the global capital of New York, everybody, every leader from every nation could participate in convening leaders from around the world to consider and address today's opportunities and challenges of the globe. One, of course, is hygiene, major one, human health and water, all the areas that Dr. Pathak is so proficient at. Just for example, a couple of years ago, the sort of things that inspire our board and our members from around the world. Our advisory council includes members from Africa, Europe, all the continents, the Americas, and the Indo-Pacific, and two from India, Pam Kwatra and Ketan Patel. So, 3 years ago, for example, we honoured Muhtar Kent. Now, he and I used to work together in the Coca-Cola business. He's today the chairman and CEO of the Coca-Cola business worldwide, and I ran a licensee out of Australia, which was a very successful one, and we worked together in Central Europe. But the reason I asked Muhtar to be our guest of honour was because he was born in New York. His father was the Consul General of New York at the time. But the significant aspect of Muhtar is as follows, ladies and gentlemen, particularly from India. You'll appreciate this point. His father was the consul at Marseille during World War II, and the Turkish Muslim consul of Marseille personally saved the lives of over 80,000 Jews from extermination. And it is in that broader context that we honoured Muhtar. More recently, we've honoured Dan Hesse, who was the CEO of Sprint, but he was the recipient of the US India Foundation Award for philanthropy. He spoke about the importance of nurturing the digital platforms of the globe, and his counterpart at our dinner was Admiral Mike Rogers, who is the director of the National Security Agency, who talked about how we secure the digital platforms that we have created. Next April, we will, including a number of honorees, one of whom has already accepted our invitation, is Paul Polman, who is the global chairman and CEO of Unilever. And as you know, Unilever has a very strong presence in your great country. And furthermore, he has a wonderful philosophy of sustainability, which is very complementary to that at Sulabh. So, as Dr. Pathak said, I first came to your country in 1970 as a very young student, and I've been back here many times, but nothing has been so impactful as the last 2 days with Dr. Pathak, and seeing the work that he has been instrumental in delivering to benefit the lives of so many people in a tangible way, in terms of the hygiene and
the addressing of water and human health, and in the more important, I think, intangible aspects, ladies and gentlemen, of enhancing human dignity. One of the things that the New York Global Leaders Dialogue feels absolutely strongly about is that every human being is valuable. No human being is any better than anybody else, and no human being is any worse than anybody else. Now, if I can make one other comment. We're here in India, which is a great country. I first met Pam, and then Pam introduced me to Mayor de Blasio, the Mayor of New York. Pam is very close to the Mayor and to the Governor of New York. And the Governor and the Mayor of New York have a very strong commitment to the relationship between the United States and India. We're here, and Dr. Pathak has been talking about issues that are very concerning to you in India. Can I say, as a fellow human being, that there is no country that can withstand the withering scrutiny of perfection. May I repeat that? There is no country that can withstand the withering scrutiny of perfection. Every one of us, in every country of the world, have very significant challenges. But I have to say that one of the reasons why, or a major reason why Pam and I are here, and we'll be joined by another advisory council member tomorrow night, Ketan Patel, who's coming in from London, is the fabulous work that Dr. Pathak has been doing with so many professional support. And we have the embodiment here to my right, to your left as you look at me, of the intangible as well as the tangible. That combination of the tangibility that you can touch and feel, you can see in terms of the toilets, and you can see in terms of today at Pitru Baksha celebration, which was a very emotional experience, a very spiritual experience. I know this is an incredibly important day here. Incredibly important day, but it's the intangible aspect. It's that human dignity. And when we were at the school yesterday, there are so many children, ladies and gentlemen, there it's the only school teaching English that is free. That is free to people who cannot afford to be there. And if you were like me, and if you had the opportunity, like I had yesterday, the privilege of looking into the eyes of these beautiful little girls and boys, and some of them not so little, and you could see the sparkle. You and I both know, as human beings, if you and I look at one another in the eye, and we shake hands, and you can see the person. You can see a person that's alive and enthusiastic and engaging life, or maybe not. Every one of them was very engaging and very alive and very enthusiastic, and they were very appreciative and very professional. You would have loved to have been a fly on the wall, hearing this wonderful young girl welcoming us in the most fantastic language and direct, very direct, and she's a great leader of the future. That's the impression I came away with. So it's been a great privilege to be here. And Pam and I will be going back to New York later this month, and we'll be having a meeting with our board and our advisory council from around the world, and with our global young leaders, and we'll be having some very positive reports to make. And thank you very much for the opportunity of being here with you today. Asikat also did. Yeah, well, today Asikat, and we had the most fantastic day today. I've read about it, I've heard about it, I have not been here before. I've been to India many times. It was a very spiritual experience. I could see that. And just being very close to people who see it as cleansing themselves and moving on in life. It's just a wonderful, wonderful way to
keep living life, keep moving forward. And as we all know, none of us is perfect. So we just keep going forward. Thank you. Pam? Pam Kwatra मैं हूँ। ये है ऑनरेबल मिस्टर फिल स्कैनलन, स्कैनलन SCANLAN, हम नाम दे देते हैं आपको। एक चेयरमैन है न्यूयॉर्क ग्लोबल लीडर्स डायलॉग USA के, और ऑनरेबल मिस पैम क्वात्रा हैं, एक PAM पैम क्वात्रा है KWATRA, पैम क्वात्रा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है न्यूयॉर्क ग्लोबल लीडर्स डायलॉग USA के। और जगदीश सेवहानी जी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं द अमेरिकन इंडिया रिपब्लिक अफेयर्स कमेटी। तो इनकी जो कमेटी है, इसमें जो न्यूयॉर्क ग्लोबल लीडर्स डायलॉग है, इसमें सिर्फ हार्वर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं वही इसके मेंबर हो सकते हैं। तो अब बच्चे जो पढ़े होंगे, आज तो बड़े लोग हो गए, कोकोकोला में हैं, यूनिवर में हैं, बड़े लोग हैं, तो उनकी एक कमेटी है जिसमें वो हर साल एक आदमी को चुनते हैं एक समथिंग अवार्ड के लिए। तो कई लोगों को देखा है अभी जाके, वो लोग किया है, इंडिया भी आए हैं देखने के लिए क्या हम लोग इस लायक हैं नहीं लायक हैं, तो इसको भी अब देखने आए हैं। ये पर्पस यही उनका मेन है कि जो अवार्ड देते हैं, पहले स्विंग जाते हैं, चेयरमैन अभी है अपने हैं, तो स्विंग जाते हैं, स्विंग देखते हैं, स्विंग बातें करते हैं, इंटेंशनल रिसर्च करते हैं कि इस आदमी की व्यक्ति लायक है, इसका जो है ग्लोबल लीडर अवार्ड है ये, तो ग्लोबल लीडर अवार्ड है इसका जो है, ये लोग तो सर्च करते हैं, पहले सर्च करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं किसको दे किसको नहीं दे, उसी ख्याल से आए हुए हैं। पैम तो इंडिया की है, पैम तो मेरे ख्याल से आप हिंदी बोल सकती हैं जी, हाँ, सो यू कैन स्पीक रेजिडेंट इंडियन अमेरिकन अब हो गई, लेकिन इंडिया की है, वो हिंदी बोल सकती हैं, जगदीश जी भी हिंदी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे करिए ना, ये नाम कपड़े फोटो कर डाल दीजिए, क्रैक करके ये दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तो पहले आप कुछ बताइए, उसके बाद उषा चौमर से थोड़ी बात सुन लीजिए, कि जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। And if I can just speak 2 lines in English and then I will carry on Hindi mein. So just so it will benefit for Phil, so he can also understand. There is one thing I felt when I first met Phil, in common with Dr. Pathak, is that he's also very calm and with lots of patience. He listens and wants to comprehend everything. And I had nominated, lots of people nominate different people from all over the world for this award. Dr. Pathak, I had already received many awards all over the world, including 2 in United Nations. And I was there when he was receiving those awards. So when I sat down Phil had asked me to meet some of the advisory council, and I told them the story of Dr. Pathak when he carried the waste which would fall. He wanted to feel the pain that Usha and her people felt, so he actually practically did it. When I told that story, the American girls who had never heard that people manually carry this were in tears. And so that's the part I wanted to speak in English so that Phil also knows the background. So जब मैं इनके साथ जुड़ी और मैंने इनको बताया कि 4-5 लोगों का नाम दिया था और इनका नाम सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में जाके आप उनको मिलकर आइए। मैं तो डॉक्टर पाठक को मिल चुकी हूँ, पर मैं इनको लेकर आई मिलाने के लिए। पर मैं जितनी बार डॉक्टर पाठक को मिलती हूँ, कुछ नई बात समझ आती है उनके बारे में।
मैं जब छोटी सी लड़की थी 5 साल की 6 साल की, तो मेरी माँ हम सब बच्चों को मथुरा वृंदावन ले गई थी। और वहाँ पर एक जगह जैसे देखने जाते हैं हम जगह जगहों पे डिफरेंट डेस्टिनेशन, वो एक जगह थी जहाँ पे विधवा औरतें थी और उन सब के आगे एक बहुत बड़ा गेट था और वो सब रो रही थी, बोल रही थी हमको अपने घर ले चलो, हम खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए। एंड उन्होंने बताया कि उनको कैसे बुरी तरह रखा जाता है। तो मैं रोज़ माँ से पूछती थी कि ऐसे क्यों वो जेल में है। वो जेल नहीं था पर वो विधवा सेंटर था। तो वो मुझे बोलते थे उनको अनलक्की मानते हैं उनको, पर कभी किसी ने समझाया नहीं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। और अब की बार मैं आई तो मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर पाठक ने मथुरा वृंदावन की और काशी की विधवा औरतों को अडॉप्ट किया। और अब की बार हम उनको मिले और मैं रो पड़ी उनको देख के। दिल्ली में भी वो मथुरा से आई थी वृंदावन से, और यहाँ पर आज सवेरे मैं उनको मिली और मैं उनको मिल के उनको बड़ा ज़ोर से मैंने हग किया और मैं रो पड़ी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पाठक, बहुत लोग इनके साथ जो काम करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ, सब इनको भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। तो आज की सेंचुरी में तो मैं रियली कहूँगी कि भगवान का अवतार ही है। हर रोज़ नए नए काम होते हैं। बहुत सारे लोग आए थे, इनको कार्सनिक डिजीज़ हो जाती हैं जो बंगाल से वो लोग आए थे, उनको भी हम मिले। तो पर विधवा वाला वॉज ए वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो कहानी शेयर की है। ये वाला पानी है जिस पानी को यूज़ करने से, पीने से उनकी सब बीमारी दूर हो गई। और वो सब हमें मिलने आए, मुझे और फिल को, यहाँ पर दिल्ली में उनको बुलाया था। वो बंगाल से, यूपी से मिलने आए और उन्होंने अपने सारे शरीर पे दिखाया। किसी ने दिखाया कि मुझे ये पूरा शरीर ऐसे था और ये पीने से सब ठीक हो गया। तो और मेरे को आज पता लगा कि डॉक्टर पाठक ना तो साइंटिस्ट हैं किसी यूनिवर्सिटी से और ना ही इंजीनियर हैं। मैंने हमेशा सोचा कि ये इंजीनियर थे। ये कहने लगे नहीं, ये मेरे को फ्लैशेस आते हैं। तो हम तो मानते हैं कि हमारी आत्मा सब कुछ साथ लेकर जाती है। तो मेरा मानना है कि पिछले जन्म में ये साइंटिस्ट भी रहे होंगे और अच्छे आदमी भी रहे, अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए वो आत्मा इतनी साफ थी कि वो सब कुछ कैरी करके, वो बोलते हैं मेरे को बस फ्लैश आता है और वही साइंटिफिक मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो बहुत हैरानी की बात है, पर इसी को भगवान के करिश्मे जैसे जो साईं बाबा ने किए या कृष्णा ने किए, उनको हम भगवान मानते थे क्योंकि उन्होंने ऐसे करिश्मे किए कि जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वही यहाँ पे सुनने को आता है मुझे हर रोज़। आज पहली बार पता लगा कि ये साइंटिस्ट भी नहीं है और इतनी सारी रिसर्च करके बैठे हैं सारी, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं वेस्ट से, सुखा के सोलर के थ्रू, एंड पानी, वही पानी जो हमने फ्लश किया है वो हम वापस यूज़ कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए ना। तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और फिर स्कैनलन जी भी बहुत खुश हैं इनका सामान देख के। जैसे कि ये बोल रहे थे कि मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, बट आई हैव, ही सेड इन इंग्लिश टू यू, कि मैं अभी तक इतना प्रभावित किसी से नहीं हुआ जितना 2 दिन से, लास्ट 2 days he has been so। जी जी जी, अभी हमने उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया है। हाँ जी। और कुछ और डिग्निटीज जो इस अवार्ड को आए हुए हैं जी, जिनको पहले दिया गया है या तो इंडिया में, इन्होंने अभी बताया उनके नाम। एक तो स्प्रिंट के सीईओ थे वो और बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे। तो हाँ जी, स्प्रिंट टेलीफोन की कंपनी है ना स्प्रिंट, उसके जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे
CEO एक्चुअली चेयरमैन थे, उनको मिला था पिछले साल, और वो भी बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, और उनको इंडिया अमेरिका फाउंडेशन विच इज़ पार्टनर्स विद बिल गेट्स, उन्होंने भी अवार्ड दिया हुआ है। और हु वाज बिफोर दैट? मुजाहिद, उससे पहले एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया में से चुनते हैं, एक ही व्यक्ति, और सब देशों से नॉमिनेशन आती हैं, और हमारे देश से भी 5 थी, और अभी हम लोगों ने सब अभी एक ही नाम सॉर्ट आउट हुआ है। अभी इंडिया से एक ही नाम है। हाँ जी, इंडिया से क्या लोग अभी आज तो हम सोचना तो यही चाहेंगे कि हम मान लें कि जो है पाठक सर को जो है आप लोग पुरस्कृत करने जा रहे हैं, हम मानना तो यही चाहते हैं, पर हम वो सब कुछ बोर्ड डिसाइड करेगा ना अमेरिका जाके, पर मेरा तो यही मानना है। Chairman is here. Why delay? Chairman is here. Chairman is here. Why delay, Chairman? So what was the question? The question is that whether you are going to just announce and to give award to Pathak. Well, the decision hasn't been made, but if I were you, I'd say it's a very strong bet, and if I were you, I'd put money on it. So वो कह रहे हैं By the way, कि अभी डिसीजन नहीं लिया, पर अगर वो बोल रहे अगर तुम होता तो सोचता कि हाँ यही होने वाला। Most probably you are going to take decision. Most probably. We're not going to be hijacked on this particular occasion. However, in the spirit of the occasion, again, I would repeat, if I were you, I'd put money on it. Okay, just going back, Dan Hesse, it's Hesse. He was the CEO of Sprint, and that's the gentleman I think you were जो referring पिछले to. साल के अवार्डी थे उनका नाम बता रहे हैं आपको, डैन, DAN उनका पहला नाम था, डैन हेसी, HECE, oh sorry, HESSE जी, ये अमेरिकन ही है। And the previous, I mentioned Mutar Kent. मैडम किस क्षेत्र से हैं? हाँ, टेलीफोन के क्षेत्र से। MUHTAR, Mutar Kent, KENT, and he is the chairman and was the chairman at the time and the CEO of the Coca-Cola company. मैडम कब तक आप इसलिए अनाउंसमेंट कर देंगे? When are we going to announce this finally? Very. Oh yeah. Yes, yes, Within before the that. next few weeks. Yeah. Hey, by end of this month, I think. First week of November, we should have it with the media. Yeah. जी. बधाई हो डॉक्टर और आप लोगों की जो है वो सुई सही दिशा में जा रही है। Thank you. बिल्कुल एकदम बिल्कुल सारे एकदम बिल्कुल जी. आपकी भी सुई सही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उषा जी को देती हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उषा चौमर है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। देखिए, पहले मैं मेला ढोने का काम करती थी। जब मैं 7 साल की थी तभी से मेला ढोने का काम करते थे, क्योंकि हम लोगों को जैसे और कास्ट के लोग सिखाते बच्चों को स्कूल जाना, जैसे कोई भी अच्छा काम सिखाते, लेकिन हम अपनी मम्मी के साथ जाते हैं और यही काम सीखते हैं, क्योंकि पराए घर जाके जैसे होता ससुराल तो वही काम करने को मिलता। तो मैं वही काम कर रही थी मेला ढोने का। 7 साल की थी, मेरी 10 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। 4 साल के बाद मेरा गोल हो जाता, क्योंकि मेरी दीदी के साथ हुई थी शादी। तो मैं वही मेला ढोने का काम करने लगी। वहाँ पर भी ससुराल में आके देखिए, जैसे कि एक लड़की सोचती है कि पति के घर जाए तो एक सपना लेके जाती लड़की कि हो सकता हो अच्छा घर मिले, अच्छे काम करने को नहीं मिले, कोई अच्छा काम मिले, तो ऐसा तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता था। वही मुझे वही काम करने को मिला मेला ढोने का। तो देखिए, सिर्फ हमारा घर बदलता है, काम तो हमारा वही रहता है। तो वही काम कर रही थी मेला ढोने का। तो वहाँ पर अलवर में आई थी, तो वहाँ भी मुझे वही काम करने को मिला। तो जो हमारे डॉक्टर पाठक जी बैठे हैं, ये अलवर में पता नहीं हमारी किस्मत किस तरह से पलट गई और चमक गई, और ये वहाँ पर आए। तो ये पूछने लगे हमसे, जैसे कि हम बहुत सारी लेडीज थी, हम भी तो उसमें, कोई तो जा रही थी मेला ढो के, कोई आ रही थी।
तो साहब बोले भाई 1 मिनट रुको। तो देखिए हम पहले कोई आदमी की बात सुनने से तैयार नहीं थे, क्योंकि अपने पति के अलावा और किसी से हम बात नहीं करते थे आदमियों से। राजस्थान में ऐसी परंपरा है, हम किसी से बात नहीं करते दूसरे आदमियों से। तो सर ने कहा मेरी 1 मिनट बात तो सुनो। तो हम बात सुनने के लिए पहले तैयार नहीं थे, फिर हमने कहा चल कह रहे रोक रहे तो सुन लेते हैं इनकी बात। तो इन्होंने हमें रोका और पूछने लगे कि भाई ये काम क्यों करते हो मेला ढोने का। अब पहले तो हमें ऐसा लगा कैसी मजाक कर रहे कोई आदमी, क्योंकि पहली बार किसी ने सवाल किया था कि ये काम क्यों कर रहे मेला ढोने। क्योंकि देखिए हमारा तो ये परदार पीढ़ी ये काम चला होता है मेला ढोने का, तो वही काम हम कर रहे थे मेला ढोने का। तो सर ने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दे तो तुम करोगे क्या। अब देखिए इतना काम गंदा कौन करना चाहता है, लेकिन हमारी तो मजबूरी थी वो काम करने के लिए, वही काम कर रहे थे हम। तो हमने कहा सर काम तो हम छोड़ देंगे, हमको पता नहीं था सर किससे कहते हैं, हम बाबा कहते थे पहले इनसे, हमको पता नहीं था कि भाई सर किससे कहते हैं या भाई साहब किससे कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे कुछ जानते नहीं थे पहले। तो हमने कहा तो भाई काम तो छोड़ देंगे, लेकिन जिससे हमारे बच्चे इनका पेट पालन हो रहा हमारा हो रहा वो हमें चाहिए। तो सर ने कहा हमें इस काम छोड़ के लिए, इस गंदा काम छोड़ दोगे तुम तो कोई और काम देंगे हम, तो वो काम कर लो तुम लोग। तो हमने कहा ठीक है। तो पहले सर ने कहा दिल्ली आओगे तुम लोग। अब देखिए दिल्ली हमको उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था। तो हम पहली बार दिल्ली गए थे तो बहुत अच्छा लगा था हमें, क्योंकि छोटे छोटे हम गाड़ियों में बैठे रहते हैं, जैसे मारुति बोलते हैं बैन बोलते हैं गाड़ियों में। हम पहली बार बैठे थे, क्योंकि हम तो पहले शुरू से मेला ढोने का काम करे तो हमने कभी इज्जत और सम्मान कभी पाए नहीं था अपमान के सिवा। तो जब हम सुलभ में आए तो हमें बहुत इज्जत सम्मान मिला, तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही थी हमें। फिर उसके बाद इन्होंने हमें नई दिशा के नाम से एक सेंटर को लगाया अलवर में। तो वहाँ पर देखिए हमने पढ़ना लिखना सीखा, साफ सफाई के बारे में सीखा, क्योंकि पहले हम नहाते धोते नहीं थे जल्दी, कि जैसे कि और कास्ट के लोग तो जाते थे मंदिर और हम करते थे शौचालय की पूजा सुबह सुबह। तो हमको वही आदत थी, काम कोई काम करने की आदत नहीं, अच्छा जैसे अच्छे रहे हम, अच्छा नहा धो कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर जैसे कि साफ सफाई पढ़ाई लिखाई, अब देखिए वहाँ पर हम अचार पापड़ बनाते हैं, जूट बैग बनाते हैं, पार्लर का काम करते हैं, सीमैया बनाते हैं। तो ये काम हम जैसे कॉटन के बत्ते होते हैं मंदिरों में जाते हैं, जैसे कि वो लोग हमसे बहुत छूट छूट करते थे पहले, आज हम कॉटन के बत्ते बनाते हैं मंदिरों में ले जाते हैं। जो हम सामान बनाते हैं वो खरीद के खाते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई पहले में तो वही थी और आज ही मैं वही हूँ, कि बदली तो नहीं है, सिर्फ काम जरूर मैं छोड़ा गंदा। तो वो कहते थे कि पहले तुम शौचालय साफ करती थी, तो शौचालयों से हमको नफरत थी तुमसे, हाँ तुम साफ सफाई से रहती हो, शौचालय काम छोड़ दिया आपने, तो वो कोई शिकायत नहीं तुमसे। अब देखिए जो लोग उनके घर में पहले मेला ढोते थे उनके हम जाते हैं, सामान बेचते हैं, वो हमारे घर आते हैं स्वयं, बिल्कुल एक साथ जैसे कि हम एक परिवार है, उस तरह से अलवर में रहते हैं हम। और वहाँ में कोई छूत छूत नहीं है, जैसे कि अब बता रहे हमारे साहब ने बताया वैसे, लेकिन हम भी बताना चाहते हैं। पहले पंडित बहुत बेकार थे, लेकिन अब बुराई नहीं करूँगा, अब तो अच्छे हो गए पंडित जी, क्योंकि मैं 2000 से काम 2003 तक करा था, मैंने 2003 से मैंने छोड़ दी। वो पंडित जितने बेकार थे पहले कि वो सीढ़ियों को नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज वो पंडित हैं, मुझे शादी में बुलाते हैं और बिल्कुल एक साथ भोजन कराते हैं, जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से हमें कराते हैं, उसी थाली में वो भोजन करते हैं उसमें हमें कराते हैं। तो बहुत अच्छा लगता। तो वो कहते थे कि देखिए आप वहाँ पर कोई ये काम बदलता नहीं, जैसे कि मैंने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ा वो काम, दूसरे ने छोड़ा तीसरे ने पकड़ा। तो सर ने क्या करा वहाँ पर टॉयलेट बनवा दी, तो ना तो टॉयलेट है कच्चे वहाँ पर और ना ही कोई काम करते हैं। अब वहाँ पर खूब अच्छे तरह से रहते हैं, एकदम इज्जत और सम्मान के साथ जी रहे हैं हम बढ़िया तरह से। और मुझे देखिए प्रेसिडेंट बनाया गया हमारे साहब ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि देखिए एक मेला ढोने वाले की लेडीज के लिए तो बहुत गर्व की बात है जी। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पूरी सर जी सर। तो देखिए सर मुझे ही नहीं, हमारे सभी जो वाल्मीकि समाज के उनको बहुत खुशी होती है कि भाई वो राष्ट्रपति नहीं बना सके हमारे देश के, लेकिन कम से हमारे सुलभ का प्रेसिडेंट तो बना ही सकते, इतना तो अधिकार है उन्होंने, तो मुझे बनाया। अब देखिए हम देश विदेश में जाते हैं हम लोग, तो मैं गई थी साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है बापू का डरबन में। तो वहाँ पर मैंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की थी बापू से कि बापू आपका सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। तो सच में सच हो गया बापू का सपना। लेकिन मैंने बापू से एक बात और की थी कि बापू आपने भी कभी मेला ढूंढने काम किया होगा। मैं तो बहुत छोटी थी, मैंने तो देखे नहीं वो शायद, लेकिन जब हमारे सर ने हमारे सामने 2 दिनों तक अपने सर पर मेला ढोया था इन्होंने,
तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इन्होंने हमारा दर्द समझा, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तभी से मेरा डोनेट काम कर रही थी, तो उन्होंने हमारा दर्द समझा कि मैं भी तो देखता हूँ इससे कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, तो उसने हमारी ये पीड़ा को सहा। तो देखिए मैं तो उनको गांधी जी मानती हूँ, उनको भगवान मानती हूँ, क्योंकि देखिए ना तो वो हमारे अलवर के ना ही तो हमारी बिरादरी के थे, वो जिन्होंने हमारी जिंदगी में इतना बदलाव लाया है। जो लोग हमसे बहुत छूट छूट करते थे, जैसे कि ऊपर से आपको पता है गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, तो जिन्हों का घर हम पहले शौचालय साफ करते थे वो लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, जैसे कि खाना लेते थे ऊपर से खाना डालते थे, वो पैसे से फेंक के देते थे, तो उनका व्यवहार बहुत गलत था, बहुत अच्छा नहीं लगता था हम लोगों को। लेकिन हमारे सारे जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है। और देखिए साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमें पुरस्कार मिला है यहाँ पर 80 घाट की जो साफ़ सफाई हम लोगों ने कराएगी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपना देश भी साफ़ सफाई रह सकता है। क्योंकि हम लोग इंडिया के लोग क्या करते हैं, खाया और फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में भी हम गए, वहाँ भी बहुत साफ़ सफाई है, वहाँ पर खुद का काम खुद ही करते वो लोग। वहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं, देश विदेश जाते तो वहाँ तो कोई ऐसा है नहीं है कभी ये समाज का ये है या समाज का ये, हमारे ऐसा कुछ नहीं, सब एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। अब मैं चाहती हूँ देखिए अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो इंडिया को अमेरिका बना दूँ, क्योंकि मुझे बहुत बाहर जाते हुए देखिए सर बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपने बहुत ही माहौल बेकार है, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो हम लोग अगर सभी मिलकर ऐसा काम करें तो बिल्कुल इसको इंडिया पेरिस बना सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम कभी जब माँ गंगा में स्नान किया था हमने, तो मतलब बहुत गंदा था पहले यहाँ पर, लेकिन आज हम अब भी आए वहाँ पर स्नान करके विश्वनाथ बाबा की पूजा भी की है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर आज यहाँ पर बहुत साफ सफाई है। क्योंकि हमारे सर ने जो कुछ करवाया है, उन्होंने बहुत 80 घाट के लिए तो उन्होंने करवाया है, लेकिन आगे हमें और सरकार का सहयोग मिलेगा तो पूरी जितने भी घाट है यहाँ पर बनारस में उनको भी सफा करवा देंगे, और जहाँ पर भी इतनी गंदगी कहीं पर होगी उसको भी बिल्कुल साफ करा देंगे। धन्यवाद। मेरा सवाल है आपसे, हाँ बताइए। आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आएंगे, आप जिस 80 घाट पर गए थे, प्रधानमंत्री ने वहाँ सफाई के लिए अपने नवरत्न की घोषणा की, देश के तमाम लोगों को अपना नवरत्न बताया कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर, उसमें किसी सफाई कर्मचारी मेहतर को, वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति को नहीं शामिल किया। आप 4 साल से महिला ढोने काम कर रही थी, आज की तारीख में आप पूरी दुनिया घूम आई हैं। बिल्कुल सर। पूरी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री के मैं इनके साथ पिक्चर में नहीं देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री के साथ की फोटो नहीं देख रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री ने अपने सफाई के जो नवरत्न बनाए हैं किसी भी वाल्मीकि समुदाय के किसी व्यक्ति को शामिल किया है, माफ कीजिए, आपकी क्या राय है ये मैं जानना चाह रहा हूँ उषा जी आपसे। अच्छा उसे बताओ, मेरे ख्याल से क्या सवाल है, उषा जी जवाब दो। जरूर देंगे, अच्छा जरूर देंगे, हम आपसे आपसे 1 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए नहीं जवाब वही देगी जब कह सकते उषा नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो सर मेरे मन की बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की नहीं कह रही। से बिलोंग करते हैं, बताओ आप बताओ समाज के मुख्य धारा में मैं सर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते इसको, हमको तो मैं तो कर नहीं सकती। अगर मुझे भी कुछ मौका देंगे तो मैं भी करूँगा। आपको पीड़ा है कि एक पीड़ा है, सफाई कर्मचारी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, क्यों नहीं, हमें पीड़ा है उनसे बिल्कुल, ये मैं सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। क्योंकि हमें बहुत पिछला काम करते हैं। आप जाइए मत लंच लेके जाइए इंशाल्लाह। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और उसके लिए यू हैव टू बी, सारे कंपोनेंट होने चाहिए। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु इज ह्यूमैनिटेरियन।